3, 2, 1. नमस्कार। 7 सितंबर 2019 आज की रात मुलाकात चांद के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिक और सभी अंतरिक्ष प्रेमी लैंडर विक्रम के चंद्रमा की सतह पर उतरने के ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनने के लिए तैयार हैं। Welcome to the coverage of soft landing of Chandrayaan 2 on lunar surface. These are the visuals from Mission Operations Complex at ISRO Telemetry, Tracking and Command Network, ISTRAC, based out of the garden city of Bengaluru, Karnataka. These display screens are showing the countdown. Also the path that lander Vikram will take as we are moments away to see that touchdown happening. Chandrayaan 2 is an Indian lunar mission that aims to improve our understanding of our closest neighbor, the moon. Discoveries that perhaps will contribute to national development and also serve humanity as a whole. These young students have participated in the space quiz and they are here to witness the historic event. At ISRO, as the boundaries of India's capabilities in space continue to expand, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, encourages exploration of space potential and also application of space technologies to help ease of living. Prime Minister, in his Mann Ki Baat address, had invited students to participate in space quiz. His appeal had got an overwhelming response, and today, apart from the scientists and other stakeholders, we have students not only of India but also of Bhutan to witness the soft landing of Chandrayaan 2 on the south polar region of the moon. So what makes Chandrayaan 2 special? This is the first space mission to conduct a soft landing on the moon's south polar region. The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all kinds of complex data. India is at the brink of creating history. Are you ready to witness history tonight? It all starts. A very good morning and welcome from the Mission Operation Complex of Telemetry Tracking and Command Network, an unit of Indian Space Research Organization, ISRO, located in Bangalore in the southern part of India. My name is Radhakrishnan and I have with me my colleague Dr. Alok, who will be bringing to you the live coverage of the Chandrayaan 2 mission in English and Hindi. Today, we are all awaiting anxiously to witness the final phase of critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan 2, wherein Indian lunar lander named Vikram will be making the soft landing on the surface of the moon. We are approximately 28 minutes away from this important event. For the viewers, just a quick update on the Chandrayaan 2 mission. Chandrayaan 2 spacecraft is a composite unit consisting of 3 independent modules, named an orbiter, a lander called Vikram,
and a rover named Chandrayaan, which is housed inside the lander unit. At the time of launch, all these three modules are held together as a single spacecraft called Chandrayaan 2, and the total mass of Chandrayaan 2 at launch was 3,850 kilograms. As you are all aware, launch of Chandrayaan 2 spacecraft took place on 22nd of July on board India's heaviest GSLV Mark III launcher from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. The launcher has successfully placed Chandrayaan 2 into an elliptical transfer orbit around the Earth. Subsequently, Chandrayaan 2 composite module raised its orbit around the Earth by using its rocket propulsion system in preparation to move from the earthbound phase to the lunar transfer phase. Now, if you look at the overall sequence that has happened since the Chandrayaan 2 was inserted into the orbit, the Chandrayaan 2 spacecraft was eventually captured into an orbit around the moon, and later it performed almost 4 lunar-bound maneuvers and lowered its orbit to almost 100 kilometers around the Earth. You may be aware, on 2nd of September, which was 5 days ago from where we are today, the orbiter and the lander module were separated from each other. And the very next day, after the orbiter and lander module got separated, and the lander Vikram module performed two deboost operations just to move the orbit from an orbit of 100 by 100 kilometers to an orbit of 30 kilometers by 100 kilometers around the moon. So as on date, where we are almost 26 minutes away from the launch, and the orbiter module is rotating at an orbit of around 100 kilometers around the moon, and we have the Vikram lander module, which is moving in an orbit of 30 kilometers by 100 kilometers. And since the launch of Chandrayaan 2 on 22nd July, today is the 40th day when landing is expected to take place. So right now we are around 26 minutes away from the start of the most important and crucial powered descent operations. And once this powered descent maneuver is initiated, it's expected to take roughly around 15 minutes for the lander Vikram to make a soft landing on the surface of the moon. नमस्ते, सुप्रभात और आने वाला दिन शुभ हो। इसी संदेश के साथ मैं आलोक श्रीवास्तव अपने वरिष्ठ वैज्ञानिक साथी श्री राधाकृष्ण जी के साथ आप सभी देश विदेश के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम इस समय इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ट्रैक के मिशन कॉम्प्लेक्स से इस बहुचर्चित क्षण का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहे हैं। उपलब्धियों के भारतीय आकाश का एक और दैदीप्यमान सितारा चंद्रयान 2 के रूप में परिणति के शिखर पर पहुंच चुका है, जिसमें चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम और उसके अंदर संयोजित रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 2 क्रैटरों मैग्नीज सी और सिम्पेलिस एन के बीच मुख्य संभावित अवतरण क्षेत्र SLS 54 PLS1 जो 70.90267 साउथ अक्षांश या लैटिट्यूड और 22.7811 ईस्ट पूर्व देशांतर या लॉन्जिट्यूड के बीच उतरकर आज भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अक्षांश और देशांतर पर उतरने के लिए लगभग 84 मिनट पहले ही पूर्व निर्धारित निर्देशांकों 70.89992 साउथ अक्षांश और 22.7811 पूर्वांतर देशांतर को लैंडर के कंप्यूटर को भेज दिया गया है। किन्हीं तकनीकी कारणों के चलते अगर ये संभव न हो सका तो इसरो ने इसके लिए दूसरा विकल्प भी तैयार रखा है, जो ALS-0 ALS-1 जो 67.74915 साउथ अक्षांश और 18.46947 वेस्ट देशांतर लॉन्जिट्यूड का चयन कर लिया गया है। आज के दिन तक पहुंचने से पहले चंद्रयान 2 की 48 दिनों की ये लंबी सुनियोजित यात्रा चुनौतियों, कल्पनाओं और यथार्थ की गणनाओं से भरी हुई थी और आज ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है।
इस संपूर्ण यात्रा का वृत्तांत अगर सार संक्षेप में कहें तो केवल इतना कि एक तरफ चुनौतियों की कमी नहीं थी तो दूसरी तरफ चंद्रयान 2 के सृजनकर्ताओं के आत्मविश्वास और तकनीकी नेतृत्व में भी कभी कोई कमी नहीं आई। तभी आज भारतीय वैज्ञानिकों और उनका ये अभियान हर कसौटियों पर खरा उतरा है। तभी ये अभियान तकनीकी और एक लंबे इंतज़ार के बाद आज वो घड़ी आ ही गई जब हम अपने इस अभियान को पूरा करने के साथ ही एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा। किसी भी अंतरिक्ष विज्ञान समृद्ध राष्ट्र के लिए वो दिन बहुत मायने रखता है जब वो शेष विश्व की तकनीकी और विज्ञान के उन्नत राह पर कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर हो और तैयार हो। गर्व और उत्साह, आत्मविश्वास और प्रगति पथ पर अग्रसर होने की चाह जैसी भावनाओं का मिला जुला प्रवाह आज चंद्रयान 2 के साथ हर भारतीय के दिल में जागृत है। इस समय आप मिशन कॉम्प्लेक्स के अंदर का ये विहंगम दृश्य देख रहे हैं। बड़ी बेसब्री से हर भारतीय वैज्ञानिक आंकड़ों पर गहन नज़र बनाए हुए है। हर आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करते हैं। The countdown is at minus 22 minutes, 2 seconds to go. After 22 minutes, you will be witnessing the power descent of the Vikram lander module. As I just mentioned, the Vikram lander module is presently orbiting in an orbit of 30 kilometers peri-Lune, which is the lowest altitude from the surface of the moon, and the Apollo, which is the highest point of the orbit from the surface of moon, is around 100 kilometers. And once the descent operation starts, we expect to take roughly around 15 minutes. And some of the important events during the descent phase, which we'll be covering in the subsequent point as we go closer to this particular activity. But before we do that, just to get a update on the orbiter module, which has been orbiting in an orbit of around 100 kilometers. As you are all aware, the total mass of orbiter module is 2,369 kilograms. At launch, we had the composite module of orbiter and the Vikram lander, which was 3,850. So the orbital module, now that it has got separated from the Vikram lander, has a mass of almost 2,370 kilograms. And out of this total mass, the orbiter, the fuel the orbiter carried was almost 1,683 kilograms. So eventually, if you look at the capability of the orbiter, almost 70% of its mass is the fuel. And the primary reason for requirement of such a large quantity of fuel is basically to raise the orbit from the Earth to the moon and then lower it down very close to the moon. As I already mentioned, when the spacecraft was injected in an orbit of around 39,000 kilometers around the Earth, eventually the orbit using the propulsion system of the orbiter was raised to 400,000 plus kilometers to get captured in the sphere of influence of the moon. So the orbiter model has a single engine which has performed nearly 10 orbital raising and lowering maneuvers, and in the process, if you look at it, is almost operated for nearly 10,000 plus seconds, which is quite a substantial time as far as the number of times and the duration for which the thruster was fired. So orbiter, in addition to all the technological elements and the challenges, has 8 scientific payloads on board, and which are primarily meant for several scientific purposes, namely carrying out the 3-dimensional mapping of the lunar surface, chemical composition, high resolution imaging of the landing site, mapping lunar craters in the polar regions, in addition to study of lunar exosphere. So life of the orbiter right now is around 1 year in orbit, as it will be orbiting around 100 kilometers from the surface of the moon, and has, as I mentioned, several scientific measurements. So the countdown is now minus 19 minutes. So on your screen you can see a plot of the time when the Vikram is going to descend from an altitude of almost 30 kilometers. It's going to cover nearly 600 plus kilometers at touchdown, and we are very close to that particular event to happen. As I mentioned, during the power descent time, it will be several phases over which the orbiter will be brought down to the lunar surface. It's not a single event.
where we just reduce the velocity and go to a lower altitude. It will be going through several phases of orbital altitude reduction and the velocity reduction, which we will explain as we come closer to this flight event. जी हाँ, इस समय हम लगभग 18 मिनट की दूरी पर जब विक्रम जो है वो उसका डिसेंड या उसका अवतरण शुरू होगा, अन्वेषण की तरफ बढ़ते हुए भारतीय कदम जो हैं उसी की दिशा में चंद्रयान 2 एक और कड़ी है। चंद्रमा हमें पृथ्वी के क्रमिक विकास और सौर मंडल के पर्यावरण की अविश्वसनीय जानकारियां दे सकता है। वैसे तो कुछ परिपक्व मॉडल मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। चंद्रमा की सतह को व्यापक बनाकर इसकी संरचना में बदलाव का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई जा सकेंगी। वहां पानी होने के सबूत तो चंद्रयान 1 ने खोज ही लिए थे और यह पता लगाया जा सकेगा कि चांद की सतह और उपसतह के कितने भाग में पानी है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से दिलचस्प है, क्योंकि इसकी सतह का बड़ा हिस्सा उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक छाया में रहता है। इसके चारों ओर स्थायी रूप से छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी होने की संभावना अधिक होगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र ठंडे क्रेटर्स जो गड्ढे हैं, वहाँ पे प्रारंभिक सौर प्रणाली के लुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर BN सुरेश को, डॉक्टर TK एलेक्स, ये दो महान वैज्ञानिक जो हैं भारत के एक तरह से स्तंभ कहे जा सकते हैं, जिन्होंने रॉकेट में और उपग्रहों में विशेष भूमिका निभाई है। आप अंदर का दृश्य देख पा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो इस तरह के कई अंतरिक्ष अभियान भारत भेज चुका है। एस्ट्रोसैट था, मंगल कक्षत्र मिशन था, चंद्रयान 1 था, और इसी तरह के अभियान आने वाले वर्षों में और भी हैं जहां पे इस तरह के अभियान आप देख पाएंगे। चंद्रयान मुख्य रूप से 3 मॉड्यूल से मिलकर बना हुआ है। ऑर्बिटर जो चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा और पृथ्वी तथा चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के बीच संकेत रिले करेगा। विक्रम लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर भारत की पहली सफल लैंडिंग के लिए अभिकल्पित किया गया है। प्रज्ञान रोवर ये 6 पहियों वाला वाहन है। इसका नाम प्रज्ञान, जो संस्कृत के ज्ञान शब्द से लिया गया है। ये पहला अंतरिक्ष मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर सफलतापूर्वक लैंडिंग का संचालन करेगा। पहला भारतीय अभियान है जो स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। पहला भारतीय अभियान है जो देश में विकसित प्रौद्योगिकी के साथ चांद की सतह के बारे में जानकारियां जुटाएगा। और मेरे ख्याल से अगर ये आज सब कुछ सही होता है तो चंद्रमा की सतह पर रॉकेट उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है और कुछ ही क्षणों में वो हमारे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ सकेंगे। हमारे उनके स्वागत के लिए हमारे इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विभिन्न केंद्रों के निदेशक उनका स्वागत करते हुए जैसा कि आप इसको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवन ने, डॉक्टर कुन्नी कृष्णन जी जो URSC के डायरेक्टर हैं और डॉक्टर VV श्रीनिवासन जी जो इस ट्रैक के निदेशक हैं, वो इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए, बहुत महत्वपूर्ण होता है वो देश, वो क्षण जहाँ पे उसके रहनुमा उसके साथ खड़े होते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है जब हमारे माननीय प्रधान जी हमारे साथ हैं। So we just witnessing the arrival of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has just arrived here at the Mission Operation Complex at ISRO's Tracking and Telemetry Command Network in Bangalore. He will be amongst us to witness today's important historic event when Vikram lander will be on the surface of the moon. So on your screen, Dr. K. Shivan, Chairman ISRO, Indian Space Research Organization, giving him a brief outline of the mission where the Vikram lander and the rover Pragyan is being explained to him. Confirm the parameters are extracted. Honorable Prime Minister of India. We'll be moving to the dignitaries gallery.
प्रधानमंत्री जी का उत्साह देखने लायक, हर छोटी छोटी चीज का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करते हुए, चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हुए। भारतीय वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच एक बार फिर से मुझे याद आता है जब मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए इसी तरह हमारे बीच आए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, और ये दोबारा एक बार फिर से सभी से परिचय लेते हुए डॉक्टर के राधाकृष्णन, इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, उनके पीछे थे प्रोफेसर के विजय राघवन जी जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इस तरीके से फिर से एक बार उन्होंने डॉक्टर सुरेश जी के सामने उनसे हाथ मिलाए, डॉक्टर टी के एलेक्स जी, डॉक्टर पी एस गोयल जी, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करते हुए। So the countdown is at minus 12 minutes. So within the next 12 minutes you will have the command that will be issued for starting the descent phase of Vikram lander. So Honorable Prime Minister of India is seated in the dignitaries gallery along with some of the other senior officials of ISRO as well who are here. And in the dignitaries gallery we also have some of the other prominent and very important dignitaries who will be witnessing the launch. As you would have seen during the coverage, we have a lot of students who have been invited here to witness the launch. This basically the students who are here have been selected based on the online space quiz competition that was conducted for the students who are in the range of class 8 to 10 across all the states in India. And finally, 2 students from each of the state and union territories have been selected to witness this historic lunar landing event along with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. So today we have amongst us nearly 84 plus school students who are here in the Mission Operations Complex. जी हाँ, आपको याद दिलाता चलूँ कि चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम मिशन चंद्रयान 1 श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा की रासायनिक, खनिज विज्ञानी एवं प्रकाश भूविज्ञानी मानचित्रण हेतु चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। अभियान के इस मुकाम पर उपयुक्त होगा अगर हम उन दिनों की भी याद कर लें जब इस उपग्रह को GSLV Mark 3 M1 द्वारा 22 जुलाई 2019 को 14:43 पर 973.7 सेकंड की उस उड़ान ने चंद्रयान को 181.617 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि अभी आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग के जरिए उसी तरह की उन्हीं घटनाओं की याद दिलाई जाए ताकि हम यहाँ से और आगे बढ़ सकें। इस समय हम करीब 11 मिनट की दूरी पर ये एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग आपके लिए, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आपको याद दिला सकें कि कैसा था वो प्रक्षेपण। We have the view of the Mission Control Center at the Mission Operation Complex. 8, 7, 6. So short video documentary for you, and just to depict the launch that has happened on 22nd of July from Satish Dhawan Space Center. This is the liftoff of the GSLV Mark 3 launcher from Sriharikota. So as you can see, the 2 solid strap-ons, 200 tons each, have been separated. And now we are in the stage where the payload fairing, inside which the Chandrayaan 2 spacecraft, including the orbiter and lander, is there. The separation of the first stage, the liquid stage L110, and finally the launcher placing the Chandrayaan 2 spacecraft in an orbit of 170 by 39,000 kilometers around the Earth. So once the orbit of the Chandrayaan 2
was 39,000 kilometer with a perigee of 170. As you can see on your screen, using its propulsion system, it performed 4 earthbound maneuvers to raise the orbital altitudes in preparation to enter the lunar transfer trajectory and then go to the lunar orbit. So right now what you're seeing is the orbit of Chandrayaan 2 being raised around the Earth, and once this is done, the spacecraft has entered the lunar transfer trajectory phase Good. and it is proceeding towards the moon's orbit, Perfect. and very shortly you will see the Chandrayaan 2 spacecraft has been captured in the sphere of influence around the moon, and it will start orbiting with an altitude of almost 18,000 kilometers by 120 kilometers. And then subsequently, using the propulsion system of the Chandrayaan 2, which is the orbiter module, the orbit was brought down to an altitude of almost 100 kilometers. So in the process of bringing it down from 18,000 to 100 kilometers around the moon, it performed nearly 4 orbital descent maneuvers, and you can see now the orbiter and the lander Vikram will get separated, and eventually the Vikram lander module, using its propulsion system, has brought down the altitude to something like 30 kilometers by 100 kilometers. So as I have mentioned repeatedly, the Vikram lander module is presently in an orbit of around 30 kilometers. By 100 kilometers, 30 kilometers is the minimum height above the lunar surface where the powered descent operations will be starting. And I think we are very close to the event when the Vikram lander thruster will be initiated. Roughly around 6 minutes to go before we start the powered descent operations. जी हाँ, हम करीब करीब 7 मिनट की दूरी पर जहाँ से डिसेंट शुरू होना है, जहाँ से उस घड़ी की शुरुआत होगी जब हम लगभग 35 किलोमीटर की पेरिजी की ऊंचाई से हम उतरना शुरू करेंगे। जिन दर्शकों ने अब इस अभियान को शुरू से फॉलो नहीं किया है, उनकी जानकारी के लिए संक्षेप में बता दूं कि प्रक्षेपण के पश्चात 24, 25, 29 जुलाई और 6-8 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा में 5 मैन्यूअर्स किए गए, जिसमें तकरीबन 508.4 किलोग्राम प्रणोदक का कुल 3604.254 सेकंड तक प्रज्वलित कर कक्षीय परिवर्तन किया गया, जहां कक्षा उत्थान किया गया। इसके पश्चात 13 अगस्त को ट्रांस लूनर इंजेक्शन TLI के दौरान 166.8 किलोग्राम प्रणोदक की खपत कर 158.309 मीटर प्रति सेकंड की वेग वृद्धि की गई और चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर मिशन के लंबे अतिपर्वणीय पथ पर एक ऐसा बिंदु आता है जो चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र के अंदर होता है। इसे लूनर ऑर्बिटल इंसर्शन या LOI कहते हैं, और इसी बिंदु पर भू आदेश के द्वारा कक्षा की दिशा में परिवर्तन कर उसे चंद्रमा की दीर्घवृत्तीय कक्षा में पहुंचा दिया जाता है। फिर 20, 21, 28, 30 अगस्त और 1 सितंबर को 745.04 किलोग्राम प्रणोदक को कुल 4422.8